So hello everyone, this video is very important for the students, those who have cleared their exams in November 23 because Institute of Chartered Accountant have launched a second campus placement program for all of you guys. So I would request all of you, those who are watching this video, to share this video with your friends, those who have cleared in November 23 because Institute ने अपना second round of a campus placement launch कर दिया है और ये काफी अच्छी golden opportunity है for all of you. राइट, काफी सारे लोगों को पता नहीं होने की वजह से आप अपॉर्चुनिटीज मिस आउट कर देते हैं. एक और इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर द पीपल दोज आर लुकिंग फॉर अ जॉब्स, आइदर फ्रेशर और एक्सपीरियंस फोक्स और लुकिंग फॉर आर्टिकलशिप और लुकिंग फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. हमने डिस्क्रिप्शन में वी हैव पुट आउट अ कम्युनिटी लिंक वेयर वी आर गोना बी शेयरिंग लॉट ऑफ वैकेंसीज एवरी डे. राइट, तो प्लीज ज्वाइन दैट कम्युनिटी आउट सो दैट यू कैन बी बेनिफिटेड आउट ऑफ इट. चलो, now let us talk about one of the important thing which is a campus placement program. ये इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है. अब देखते हैं इसके बारे में क्या क्या डिटेल है. डेट कब से है वो तो ठीक है, अभी नीचे आ जाएंगे. पार्टिसिपेशन फीस कंपनीज के लिए नहीं है. राइट, कंपनीज से पहले वो लोग पैसा दबा के चार्ज करते थे, बट दिस टाइम दे आर नॉट गोइंग टू बी चार्जिंग एनीथिंग टू द कंपनीज. क्वेश्चन आता है स्टूडेंट को क्या फिर से पे करना है क्या? स्टूडेंट्स आर ऑल्सो नॉट सपोज टू पे बिकॉज लास्ट टाइम है ना, इन लोगों ने एक डिटेल गाइडलाइंस इशू की थी और सिंस आई एम इनटू द स्पेस फॉर 4 years, तो एक गाइडेंस में लिखा हुआ है क्लियरली कि स्टूडेंट से चार्ज नहीं करते हैं. आई थिंक दिस इज द फोर्थ टाइम दे आर डूइंग अ सेकंड कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम. तो जनरली क्या होता है, फर्स्ट कैंपस हुआ, इसमें बिग सेंटर, स्मॉल सेंटर और फिर सेकंड कैंपस. राइट, तो फोर्थ टाइम दिस इज समथिंग व्हिच दे आर गोना बी डूइंग. राइट, तो कंपनी से भी पैसा नहीं ले रहे, स्टूडेंट से भी नहीं पैसा ले रहे. बट द क्वेश्चन इज हु इज एलिजिबल. राइट, अ कैंडिडेट हु डिड नॉट गॉट एनी ऑफ द जॉब फ्रॉम द प्रीवियस कैंपस प्लेसमेंट इज एलिजिबल. मतलब क्या, मैंने फॉर्म भरा था, राइट, मुझे कंपनीज ने शॉर्टलिस्ट किया नहीं कि डज नॉट मैटर, बट आई डिड नॉट गॉट अ जॉब. राइट, बट आई डिड नॉट गॉट अ जॉब. सर मेरे साथ केस अलग हुआ है. से फॉर एग्जाम्पल, राइट, मैंने फॉर्म भरा था, आई गॉट शॉर्टलिस्टेड बाय द कंपनी, मैंने पोर्टल पे कंसेंट नहीं दिया, आई हैव नॉट गिवन अ कंसेंट वेदर आई एम एलिजिबल फॉर दिस. द आंसर इज येस. राइट, इन शॉर्ट, अगर आपने कंसेंट नहीं दिया है तो यू आर एलिजिबल. सर नेक्स्ट डाउट इज, सर आई हैव नॉट फिल्ड आउट अ फॉर्म अर्लियर, मैंने फॉर्म नहीं भरा था, बट वेदर एम आई एलिजिबल फॉर दिस प्लेसमेंट प्रोग्राम नाउ? द आंसर इज yes, but again for this you need to mail to an institute saying that I have missed out the opportunity previous, please give me this opportunity. For this case there might be a possibility that they will be charging 500 rupees क्योंकि you have not filled out a initial form. इसके लिए आपको CA Jobs का जो email ID है वहाँ पे you need to coordinate, and also the support number of ICAI which is given, you need to coordinate with them and ensure that you fill out the form. Okay, now let's move forward. अब सवाल ये आता है कि how many company से, for example, if a company have a one vacancy, so how many candidates are going to be shortlisted? Same, 10 candidates are going to be shortlisted. Now how many consent I can give? So say for example I have filled out a form, right? After I filled out a form, मुझे कितने, how many companies I can give a consent? You can give a consent to 3 companies, which is there. It is not written in this brochure, but of course I have different brochure here from which I can definitely tell you out कि यहाँ पे हो जाएगा. तो दिस इज अ प्रीवियस ब्रोशर, राइट, पुराने कैंपस का हुआ था, सेकंड कैंपस का, तो सेम गाइडलाइंस दे आर गोना बी फॉलोइंग दिस टाइम. नाउ लेट अस कम टू द टाइमलाइन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, राइट, व्हिच आई वांट यू टू प्लीज सी इट आउट केयरफुली. ओके, so the first important timeline is candidate registration. So 23rd and 24th of April, right, is your registration date. So here you are gonna be registering yourself, right? Very simple thing, you just need to choose out a center, right? आपको एक center choose करना पड़ेगा, which center you want to sit for, right? No small center, big center का कोई पंगा नहीं है, so center choose करना which is there. अब सवाल ये आता है कि सर मैंने तो पहले कुछ डेटा फिल कर दिया था, filled out the details out, can I change it? The answer is no. जैसे कि I've participated in the previous campus but I'm not selected, can I do a fresh filling or just update? There's no option to for updation in the portal. Last time हमने भिजवाया था कंपनीज को, क्या आया था, कैंडिडेट, डियर कैंडिडेट, एज पर योर अपील्ड email you have to log in and save the last page of a center to register for second round of a campus. Editing is not possible at the candidate side, है ना. तो आपने जो पुराना फॉर्म भरा था, सिर्फ आपको ये सेंटर चूज करने का ऑप्शन आएगा कि कौन सा सेंटर आपको चूज करना है. Once you have filled out a form, candidate registration हो गया, company will shortlist your profile and you need to give a consent by 30th of April, right? If you've missed out this date, gone, right? 30th April is one of the important date for all of you guys where you need to give out a consent. After you give the consent out, one of the important parameter is interview date. So 4th May is gonna be an interview date which is there. One of the important thing which I wanted to tell you out here is, many a times I have seen it personally from my experience of 4 years
कि lot of good companies are also going to be participating here. You know the reason why? The reason is this campus is free of cost. तो companies को पैसा नहीं लगता है, तो definitely companies can come in. Now one of the bad thing I would say, मुझे बहुत बुरा लगा एक चीज देख के, यहाँ पे companies participating have a minimum CTC of 7.2. राइट, अगर आपको याद होगा मेन ब्रोशर में इट वाज 9 लाख, एंड इनफैक्ट इफ यू कुड सी 1 ईयर प्रीवियस ब्रोशर जो मेरे पास है, एक साल पुराना ब्रोशर में ये 9 लाख था. मैं आपको दिखाता हूँ. राइट, इफ यू कुड सी, दिस इज आई थिंक ऑलमोस्ट अ ईयर बैक ब्रोशर, है ना. इधर देखो 9 लाख सीटीसी है, सेम ब्रोशर है. ये कब का है भाई, आप देख सकते हो 2023, राइट में. तो ऑलमोस्ट ज़्यादा समय हुआ नहीं है. एक साल पुराने ब्रोशर में मिनिमम सीटीसी था 9 लाख, एंड नाउ दे हैव पुट द मिनिमम सीटीसी है 7.2. आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, डू यू थिंक इट इज गुड और बैड? आई डोंट नो, बट इंस्टीट्यूट इज ट्राइंग देयर बेस्ट टू इंश्योर दैट मैक्सिमम पीपल कैन गेट देयर जॉब सच एज दैट. So this is something which institute have done for you. Please do not miss out a timeline. This is something which is very important. And also I would request you to please join our community where we are going to be sharing lot of important things with you. Now one more important thing before we wind up this, right? Do not forget to visit our website camonk.com. Here you are able to get lot of masterclasses. We have a masterclasses for all the different domains which you're going to be looking for. Either it is a stat audit, finance, FP&A, M&A tax, direct tax, indirect tax, internal audit, management consulting, LinkedIn, FDD, right? Recently completed. You'll love this masterclasses. And with this, we have also created a tool, right, where you can just practice it out with your interview bot, select a domain where you want to get into, choose your fresher experience, upload your CV and click on a start, and the bot is going to be asking you a question. Plus also you can build your resume, plus also you can review your resume here, which is completely a free of cost website. As in for you need a coins which is there. The time you log in you get 100 coins. इसके अलावा अगर आपको और coins हो चाहिए होगे तो definitely you can get it out. With this, if you have any more queries related to interview training and placements, do not hesitate to put it in the comment section. We'll be happy to help you out. Stay in touch. Wish you all the best for your career ahead, and don't forget to join our community for more updates.